last unit is completely related to the wireless network security, wireless security even. So there is some kind of the there are lots of topics in this unit, तो मैंने combine कर दिया है. Now topic wise हम deal करेंगे. Okay, so these are the contents of अच्छा कोई join किया है, somebody has joined, so just wait, मैं यहाँ कुछ problem है, नहीं okay. So basically this unit is having lots of theoretical material and theoretical aspects related to network security. Whatever the mathematical encryption techniques, mathematical structures, modular arithmetic that we have discussed already. So most of the time we will deal with we will discuss on PPT for this unit. Let's say unit 3, internet security and web security. And whenever it is required, so I will also move to the digital board also. Okay, so these are the different contents of this unit. Like web security, whenever I am writing web security, simultaneously the word reflects, another word reflects, that is internet security with it, no issue. Now in web security, the second point is TCP IP security and secure socket layer. So SSL in TCP IP model, देखो TCP OSI model and TCP IP model, basically OSI is the conventional model for any kind of the communication system. TCP IP is, we have even discussed this, that TCP IP suite or model is the refined version of OSI. So generally now these days TCP IP model is followed. Okay, so that is why there is one line is written, that is TCP IP security and secure socket layer. Now this is most important protocol that is used here for providing the web security or the internet security. Another kind of the protocol, that is transport layer security, that is TLS. We also talk about the email security, how our email service, means how we can secure our email services. Then IP security, basically it is one of the part of this TCP IP complete security model. So separately we will also discuss. Now rest 3 topics like DNS security, like DNS SET authentication protocols, phishing attack, SQL injection, and database management. So basically all are related to the backend things, how we can maintain our database and how we can secure our database. So very quickly we will discuss all the things, because there are lots of protocols. If we will start discussing about the protocols, so there are n number of protocols in each layers. Okay, so there is one book also, name is Douglas E. Comer. मैं लिख भी देता हूँ. Okay, just a minute. I'm simply using a glass board. ये glass board visible है अभी आप लोगों को? It is visible? Yes, okay, fine. So there is one book, Internetworking with TCP IP. ठीक है, principal protocols and architectures, something like this, and author Douglas E. Comer. It is very good book related to the networking protocols.
अभी कनेक्शन ड्रॉप हो गया था आई थिंक। देखो अभी विजिबल है, ठीक है। यस सर। वो कनेक्शन ड्रॉप हो गया था, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम था। सो इंटर नेटवर्किंग विद टीसीपी आईपी एंड इसका राइटर है डगलस ई कॉमर्स। सो ऑल काइंड ऑफ द प्रोटोकॉल्स are discussed here. If you want to study protocols, all the protocols in detail like ICMP, okay, ARP, RARP, and बहुत सारे protocols हैं, आप चाहो तो उसको देख सकते हो. You can refer this. Otherwise, I will tell you the important ones. Okay. So now we will move, as I told you that this unit is having lots of the literature thing, lots of theoretical aspects. So okay, so with this we can, all business, government, commercial sectors maintain websites, you know very well, websites, and in word of internet, how increasingly it is growing now these days, internet word. Okay, so vastly use of internet, ये सारा कुछ simple लिखा हुआ है. Now here in this module we will put our focus on SSL and TLS. SSL is secure socket layer. Secure socket layer. So these are the two main protocols that we will have the focus on it, on those. Now firstly we will discuss the different aspects of requirement of web security and threats related to the web security. Now what are the requirements? So for understanding the requirements, so consideration is www, you know very well, it is basically client server based application. Even though in our practical in our lab session we are also having one practical related to the socket programming, client, और उसको client server programming भी बोलते हैं. So we will also see separately this client server programming. Now this is communication process or system. Then threat becomes serious when money transactions get compromised along with the secret data file. Now this is very, देखो, data leakage एंड डेटा लीकेज का मीनिंग ही ये है कि आपका इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और उसके साथ में मनी इन्वॉल्व अगर होता है, देन इट विल बी अ क्रूशियल थिंग. ओके, अच्छा, एक आप सिंपल सा एक ऐसे ही जनरल डिस्कशन करते हैं. यू ऑल आर यूजिंग एंड्रॉइड फोन ना? यस सर. ओके फाइन. एंड्रॉइड फोन में आप व्हाट्सएप भी यूज करते हैं, फेसबुक भी यूज करते हैं, सारा कुछ यूज करते हैं. सपोज करिए आपने व्हाट्सएप का कुछ इमेजेस या जो भी आया है डाउनलोड किया है, आपने डिलीट कर दिया. क्या कोई तरीका है उसको रिकवर करने का आपके मोबाइल फोन से? सर टूल्स आते तो हैं, डिलीटेड वाली चीजें भी रिकवर हो. टूल नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टूल, आई एम सिंपली टॉकिंग अबाउट द लॉजिक. व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? हाँ, टूल तो अवेलेबल है, नो डाउट. देखो उसमें आप बैकअप एक ऑप्शन होता है, आप सभी के मोबाइल में, आप मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते होंगे इस ऑप्शन को. बैकअप होता है, मोबाइल फोन ऑटोमेटिकली बैकअप क्रिएट करता है, ठीक है, सभी का, व्हाट्सएप का, फेसबुक, व्हाटएवर.
आईफोन में अच्छा, अगर आप बैकअप को डिलीट करते जाएंगे तब 1% चांस है कि आपके डेटा को इंट्रूडर या हैकर समहाउ आप आपके डेटा को सेव कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आईफोन यूज करते हो तो क्या होता है, जो भी आपका डेटा है, जो भी आपका बैकअप है, ठीक है, वो बैकअप कहाँ चला जाता है? आई क्लाउड में। दे आर हैविंग क्लाउड सर्वर्स, ठीक। तो अब वो आपके मोबाइल डिवाइस के साथ साथ किसी क्लाउड में भी स्टोर है, ठीक। सो जो क्लाउड कंप्यूटिंग रिसेंटली is very interesting field now these days, just because for understanding the management of data, ठीक। तो आप जो टूल्स आते हैं, वो टूल्स जो आप बोल रहे हैं, sometimes the tool works on your device, and if your device you have deleted all the data from the backups also from the device, then there are another tools that will search your data and fetch the data from the cloud also. Okay, so these are the things. That's why data leakage and all other things are now very important or crucial thing now these days, because of the internet and web services are the common services now these days. Okay, now if we talk about the services, threats and consequences and the solution also, to with this table we can easily understand. Now the whenever we talk about the security services na, ye one, integrity, confidentiality, denial of service and authentication, these are the basic 4 security services that always will be there whenever we talk about the security of services, always. इसके अलावा भी कई सारे होते हैं, डिपेंड्स ऑन दी स्ट्रक्चर, बट दीज आर दी बेसिक थिंग्स। नाउ थ्रेट्स क्या है? इंटेग्रिटी से मीनिंग क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ यूजर डेटा, मेमोरी एंड मैसेज। देखो यहाँ मेमोरी टर्म आ गया है, तो कई बार आप मॉडिफाइड डेटा, हैकर डेटा को स्टील करके उसको मॉडिफाई कर देता है। समटाइम्स मेमोरी एंड मैसेज को भी वो रीड कर सकता है, जो अभी हमने डिस्कस किया, लाइक fetching the data from the backup or fetching the data from the cloud. So this is the thing. Now consequences, definitely information loss है, machine got compromised, basic thing. Solution क्या हो सकता है? अभी तक जो हमने पढ़े थे, मैसेज ऑथेंटिकेशन, encryption technique along with the message authentication or the simply authentication techniques. Second is the confidentiality. Confidentiality is related to the sender and receiver, like no one can deny even something like this, or even your data is secure into the channel even. आप WhatsApp में, मैं इसलिए ये सारी चीजें देखो एग्जांपल ले रहा हूँ, because you all are aware all these things and you are final year students and you can easily understand all the advanced examples. WhatsApp में आपको एक कहीं पर मैसेज भी आता है, आपके लिखा हुआ भी रहता है, आपने अगर ध्यान दिया हो तो, योर मैसेजेस एंड वॉइस डेटा बोथ आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। आता है नहीं? Yes, sir. ठीक है। So if it is end to end encrypted, then what is the problem? If it is still encrypted, end to end encryption is there, then still all the complete word is talking about the data leakage of the Facebook, that we are saying that Facebook is not secure, Facebook is not reliable, WhatsApp is not reliable, something like this. Like अभी ये चाइना वॉर स्टार्ट हुआ तो कैम स्कैनर एक सॉफ्टवेयर था, ठीक है। So they are saying that they are giving the data, means cam scanner and other things, they are giving the data to the
Chinese government, something like this. But all are the end-to-end encrypted. Then what is the problem? बताएगा कोई? इसको थोड़ा सा ऐसे समझो. अच्छा, आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं, उसमें AES यूज होता है. इंडिया में तो होता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड. ठीक है, तो इनक्रिप्टेड वर्जन तो आप यहां भी यूज करते हैं. थ्रेट का पॉसिबिलिटी तो यहां पर भी है. अच्छा चलो ठीक है, ऐसे ही समझ लो फिर. कॉन्फिडेंशियलिटी का बेसिक मीनिंग यही है कि आपका डेटा सिक्योर होना चाहिए. तो अभी हम बात, अभी एक वर्ड चल गया है, वर्ड क्लाउड कंप्यूटिंग. Now this is very dangerous thing. Even sometimes it is very important thing, simultaneously dangerous thing also, because there is kind of the server in the cloud that our data will be there. So data nahi kahin jata. Now third service is the denial of service. So with this, denial of service means in between of communication. अच्छा, ये हम confidentiality पर को वो छोड़ दिया. Now threats like security breach over client server data. देखो ये रहा, वही बात आ गई. Privacy loss होती है, हम चाहो तो if we wish to write information loss also, so वो भी यहाँ लिख सकते हो, no problem. Information loss. Encryption technique same, all are having all the things are having the solution simply like cryptographic encrypted encryption algorithm along with the authentication system and hash system. Now the denial of service means service must be go on, like show must be go on, something like this. Services कभी ब्रेक नहीं होना चाहिए. उसी तभी आप बोलते हैं सिस्टम हैंग हो गया है या सर्वर पर लोड ट्रैफिक ज्यादा आ गया है. तो या तो आप किसी तरीके से सर्विस को ब्रेक करेंगे या फिर आप दूसरी सर्विसेज को अप्लाई कर देंगे, हैकर अगर है. सो फ्लडिंग द मशीन, आप इररिलेवेंट डेटा को ट्रैफिक पर एंटर करा देंगे. सो जो पर्टिकुलर सर्विस है वो स्टॉप होगा. डिसरप्टिव प्रोसेस होती है ये. सो प्रिवेंशन इज डिफिकल्ट. इसको रोकना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इट इज नॉट रिलेटेड टू द क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम. Basically it is related to the management, communications establishment management, something like this. आपका आप how you are manage your system, तो उस पर डिपेंड करता है. Now the authentication वो आप सभी समझते हैं. like आपका डुप्लीकेट सिग्नेचर किसी को नहीं करना है, वही केस है. तो फॉल्स कॉपीज ऑफ डेटा बन जाता है. कॉन्सिक्वेंस तो एक ये है, और इसके लिए भी क्रिप्टोग्राफिक मेथड इज द बेस्ट सॉल्यूशन. सो दीज आर दी simple threats and consequences and the solutions. Okay, so now we will move to the TCP/IP protocol stacks. So we generally we talk about, अच्छा यहाँ पर हम ऐसे कर लेते हैं. जनरली वी, अगर मैं TCP/IP की बात करता हूँ, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर. नाउ दिस इज 4 लेयर and 5 layer, 5th layer. So 5 layer protocol, 5 layer module is this TCP/IP, and each layer, this is physical layer, you know very well. This is data link layer. Now this is network layer. 4.1 is the transport layer, and 5 is the directly application layer. So generally we talk about the upper 3 layers because lower 2 are related to the physical things of the communication system. So most of the things are fixed here in the lower 2 layers. So network layer, transport layer and application layer we talk about.
So these are the basic protocol structures of network layer. तो यहाँ पर IP सिक्योरिटी, TCP, FTP, फाइल ट्रांसफर, ये सभी आप ऐसे समझ लो कि ये वैसे तो HTTP, FTP ये सभी एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर की जब हम बात करते हैं, नाउ दिस इज द थिंग, SSL और वी कैन से TLS, सिक्योर सॉकेट लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ओके, हाँ ठीक है। When we talk about the application layer, so यहाँ पर कुछ अलग ऐड हो जाते हैं प्रोटोकॉल। PGP, pretty good privacy service, set secure electronic transaction service for different purposes। तो हमारा फोकस जो है वो SSL and TLS पर रहेगा। After that we will talk about the PGP and set also. So we will discuss SSL in detail and TLS in detail. Okay, so after this we will move. Now SSL is secure socket layer, provides the security services between TCP and applications that use TCP, अभी देख लिया हमने। And internet standard version is called TLS. As I told you that web security and internet security both are the words that both words run simultaneously. So when you say internet standard, then you will say TLS. So SSL TLS uses symmetric encryption. Now this is the important thing, that ये symmetric encryption को ही use करते हैं, not the public key cryptography, for providing the confidentiality. And MAC is definitely used, message authentication code, for data integrity purpose. Now after this we can say that it includes protocol mechanism. There are lots of protocols related to SSL. We will see the structure of SSL TLS, and there are different protocols that we will talk about in detail one by one. And this is a specifically designed set secure electronic transaction system, कह लो protocol बोल सकते हो, just for credit card transaction purpose on the internet. So our all the transactions through the credit card will be handled by SET protocol, secure electronic transaction. All are the completely, we can say, recognized thing, whether we are working in India or we are working in other countries. So these are the reference things. All the countries' communication system models will follow the same rule. So यहाँ लिखा भी है देखो, which is an open encryption and security specification process, open process. So open to all. Now rules are set for rules are same for the all the countries, or and we can say all the users. Okay, so now we will move. So secure socket layer, like it is a transport layer security service, and SSL originally developed by Netscape Communication Corporation. It is internet standard known as TLS, as I told you. And SSL uses TCP, transmission control protocol, to provide a reliable end-to-end service. अब ये word चलेगा end-to-end. इसका एग्जांपल अभी आपको बताया था, जैसे व्हाट्सएप में आपके मैसेज आता है that your messages and your data is end-to-end encrypted, something like this. Hope to hope. अब hope यहाँ word use नहीं कर सकते, because whenever we deal in the networking, then we talk about the hope, means actual transmission is there. That's why we are using end-to-end, not hope to hope. Now SSL has two layers of protocols. So how many protocols are there?
Now these are the protocols. TCP and IP we know very well. So here what kind of the protocols we have to discuss, and protocols something like this. एक तो SSL handshake, SSL change cipher protocol, then SSL alert protocol, HTTP we know very well, hypertext terminal protocol. Now SSL record protocol. So these are the four protocols, different protocols we have to discuss related to SSL. So this is the SSL protocol stack. Two layer इसलिए बोला because network layer, or we can say the transport layer and application layer is involved. ये HTTP application layer protocol होता है. That is why we are calling it two layer protocol, application layer protocol. So as I told you, this is the theory part. So थोड़ा थोड़ा ही हम discuss करते जाएंगे. Otherwise lecture will be bored. Okay, so for today's lecture, this is the introduction. I'm done from my side. After this, from tomorrow's, we will start the all the protocols, all the different protocols one by one. Okay, now I'm stopping. If any doubt is there, then you can ask. ये इस तरीके से ठीक है ना, इतना पेज पर, बिकॉज थोड़ा थ्योरेटिकल अब आने वाला है थोड़ा टॉपिक. ठीक है. Yes, sir. हाँ, अदरवाइज अगर हम बहुत जल्दी चलेंगे इसमें, देन लेक्चर विल बी बोर्ड नाउ, क्योंकि अब मैं उसको थ्योरी है तो आई हैव टू एक्सप्लेन. ओके Okay, sir. ओके. तो पढ़ना, डाउट आए तो पूछना, अदरवाइज अभी पूछना चाहते हैं देन यू कैन आस्क, अदरवाइज डन फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेस लेक्चर. ओके, ठीक है. तो फिर कल मिलेंगे, आगे इसके आगे पढ़ते हैं. ओके, थैंक यू.